हाँ निसार साहब। निसार साहब, ये जी। हाँ मैम प्रिंसिपल से बात करके उन थोड़ा देख लो प्रिंसिपल साहब से बात करके कि ये सभी पार्टिसिपेंट जुड़ गए हैं, कौन कौन जुड़ा है, थोड़ा सा ब्रीफ ले लो इनसे प्लीज। ठीक है। प्रिंसिपल साहब,
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? मैम बस अल्हम्दुलिल्लाह, मैम अल्लाह का करम है। हेलो गिल साहब। हाँ, गुड आफ्टरनून गिल साहब, आप कैसे हैं? हेलो, मैं ठीक हूँ, अपना कहिए क्या हाल है? और जासिर बस साहब, बस बढ़िया बढ़िया? बढ़िया 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 जी। मैडम आपको अभी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? हाँ फाइन मैम। मैम अब मैं स्टेट डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र संगठन मिनिस्ट्री यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख पीएस गिल। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी। वेरी नाइस टू सी यू एंड मीट यू, नॉट इन पर्सन, एटलीस्ट वर्चुअली। या मैम। Good morning, ma'am. Principal GDC Ramkot. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? I'm good, ma'am. Always in need of your blessings, ma'am. Oh, thank you जी, always there for you. We are all dear colleagues to each other. नमस्कार मैम। That's your greatness. नमस्कार जी, नमस्कार मैम स्टार्ट करें? जी जी प्लीज। ओके मैम, थैंक यू सो मच। Should I start again? They are the spirits, they are the answer to every appeal. They are the mind, they are the thinkers. Given a task, they excel, these little thinkers. They won't shirk, they are the doers. They portray the society, they are its mirrors. To tell you the truth, our future lies with our youth. Give them wings, high will they soar. Deep within, patriots to the core. With ideas refreshing, they are leaders in the making. Isn't it the truth? Our future is light with the youth. Good afternoon. कंडक्ट ही नहीं चल रहा था वरना। After two very successful rounds at district and regional levels, it's an honor for me to welcome you all to today's state level youth parliament organized by Nehru Yuva Kendra in collaboration with Government College for Women, Parade Ground, Jammu. The youth parliament goes a long way in strengthening the roots of democracy among our youth. It offers a great platform to our young minds to learn, to imbibe, and to express effectively. After competing well and proving their mettle in apt usage of vocabulary, expression, and knowledge, 10 zealots have made their way into today's event. And may I steal a moment to seek the Creator's blessings and welcome you all to this invigorating event. I welcome our worthy chief guest of today's event, our devout Director Colleges, Professor Dr. Yasmin Ashai, to the occasion. I also welcome Mr. Vikram Singh Gill, Director Nehru Yuva Kendra Sangathan for J&K and Ladakh. I extend a hearty welcome to the worthy jury, the five pearls of wisdom, Dr. Ashu Vashisht, Principal Government Degree College, Ramkot, Dr. Yasir Hamid, Assistant Professor, Department of Psychology, University of Kashmir, Srinagar, Dr. Musawwir Ahmed, Program Coordinator, NSS, University of Kashmir, Mr. Sandeep Dogra, in charge, PM Krishi Sanchai Yojana, J&K. They will all be witnessing the event online, and Mr. Anil Suri, industrialist, who has graced us with his presence on the campus. I extend a welcome to our spirited participants, Lubina Masood, Usman Ghani, Ubaid Majid Mir, Anmol Sharma, Shaina Singh, Irfan Ahmed Khan, Ifra Batul, Parveen Kumar, and Amandeep Singh.
I also welcome the faculty and students from various colleges who have joined the YouTube live streaming. May I now call upon our worthy director colleges to kindly address the participants and throw open the event. Please, ma'am. Thank you very much. I'm sorry, did not get your name, madam. At the very, sorry? Alpana Vora from Alpana. Department of Zoology. Okay. Alpana ji, thank you very much. I'm humbled, and at the very outset, I would like to express my heartfelt gratitude to the principal of the host college, that is Principal Parade College, my colleague, Professor S. Saraswat ji, and also the entire organizing committee who's holding this kind of a very important, in fact, providing a very important platform to our students. At the very outset, I would like to welcome Mr. Vikram Singh Gill, who's the director of Nehru Yuva Kendra, organization. I would like to welcome all my 5 judges. I would like to welcome Mr. Anil Suri, who's on the campus. I would like to welcome all my dear participants who are participating and all others who joined virtually and who, this entire session is also being streamed on the YouTube. So welcome to all our dear participants. Well, it's not going to be a long speech. I have just been told to be a part of this very important event. First of all, it's a very, blessed thing that our colleges are coordinating and collaborating with various organizations. So GDC Women's Parade has collaborated with Nehru Yuva Kendra, and we are very happy that we, do these kind of collaborations and help our students basically to excel. Well, Alpana has already talked about how important youth is to us. I'm sure we all know we are not going to undermine their importance. In fact, when we talk about our youth, and usually young adults enter our colleges by the age of 18, 19, and then they're with us till they're 22 or 23. Now, because we have PG programs in our colleges, we have integrated programs. So, they also pass out as postgraduate students, not as undergraduates, but as PG graduates from our colleges. It's so important that, we provide the right kind of platform to our students in order to help them, like you already said, to express what is in their mind. See, one is like, it's important we brainstorm their thought process. We help them channelize their energies. We direct them into the right direction. And 2 is whatever language they're using in order to express themselves, if it's a youth parliament. So obviously we know the importance and how important there are various topics which are assigned, being given to students, and they are supposed to speak on those topics. So one is that if we are helping the students to brainstorm their own thoughts, to think aloud, to share their expressions and thoughts and feelings, whatever kind. There are even sometimes emotional feelings which I want to give vent to and share with people, and I want a platform for that. That is one of the objective. 2 is you specifically are giving them topics, and of course, they are adding to their knowledge content, they're adding to their comprehension. And 3 is, as students, we are helping them to develop the proper kind of diction, the pronunciation, the confidence to be a part of a platform where there are judges to evaluate you, where there are your own teachers of your respective college where you're studying, and where there are so many people who are listening to you. So I'm very happy that we are providing this kind of platform to our students. I'm sure the students have passed through various levels. Now we've come to this UT level, and then once our students, graduate from this level to the national level, and then our students will also compete at the national level. I have full confidence and faith in the potential of the students of UT of J&K. Our students have a lot of potential. They're very, very capable. And when I, speak of English language, we know our medium of instruction is English right from our kindergarten, but then still our students belonging to very, very remote areas also do very, very well compared to children of rest of the country. Because I think it's God given that our students have the kind of potential and they excel whenever they're given a chance. So we all must encourage our students to do very well. It's important to participate, even if our students are not able to, get to the positions.
which we, when we usually rank them, because right now there are 5 judges. And even as a matured woman at the fag end of my career, when I say that, oh, judges are there to look at me and evaluate me, it also gives me, I become slightly jittery. But then I have to advise my students that it's a kind of a competition. This is a world of competition. Your participation is very, very important. Don't worry. You're being evaluated on the right kind of criteria. And even if you're not among the first 3, you are a participant who's been given a platform to speak to people on whatever topic, and that will give you a kind of instill a kind of confidence and self-confidence in you, so that tomorrow you can face the world and you can face any kind of challenge. I throw this today's session open, and I congratulate my participants. I congratulate the college for taking this initiative. I congratulate Nehru Yuva Kendra for collaborating with Parade College and helping us to help our students reach to various levels, because ultimately, even if you look at NEP 2020, the objective of NEP 2020 is to promote excellence, is to promote access and equity and equality, and ultimately quality education to our students, so that tomorrow they can compete in any part of the country. Thank you very much. And once again, thank you, Principal Parade and the entire organizing committee, for giving me a chance to speak to my students and speak to my colleagues. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for your encouraging words. Our participants and the organizers really needed this energy portion. I now request Mr. Vikram Singh Gill, Director, Nehru Yuva Kendra Sangathan for J&K and Ladakh, to say a few words, please. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am, Director प्रोफेसर डॉक्टर यस्मीन जी ने सभी कुछ तो बोल दिया है, सारा कंप्लीट कर दिया है. दैट्स गुड, बहुत बढ़िया है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कॉलेजेस के साथ एनएसएस यूनिट के साथ मिलकर नेहरू युवा केंद्र एक ग्रास रूट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है और एशिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये. और जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 दिसंबर 2017 को मन की बात में ये बात कही थी कि हमारे जो युवा है जो पार्लियामेंट तक सीधे नहीं जा सकते, उनको एक चांस दिया जाए, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपनी मन की जो बात है, जो अपने मन के विचार है, वो दूसरे को सामने ला सके. इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है कि देश के युवाओं की आवाज सुनी जाए और राष्ट्र निर्माण में उनका क्या योगदान हो सकता है, वो क्या सोचते हैं, ये सुना जाए और एक डॉक्यूमेंट तैयार करके पार्लियामेंट में इस चीज को पेश किया जाए, एक मॉक पार्लियामेंट के रूप में इसको आगे लाया जाए. मैम, मुझे इस बात की खुशी है कि जो टॉपिक स्टेट लेवल के जो टॉपिक सिलेक्ट किए गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से जो टॉपिक आए हैं, जिसमें सबका साथ सबका विकास, संकल्प से सिद्धि, एक भारत श्रेष्ठ भारत, बीज से बाजार तक, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इस टॉपिक को हम स्टेट लेवल पे इस आज के टॉपिक जो है बच्चे हमारे सामने नौजवान रखेंगे. और मैं बताना चाहता हूँ मैडम डायरेक्टर, मैं आप जी को बताना चाहता हूँ, सभी हाउस को बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमने इस काम के लिए, इस की सिलेक्शन के लिए 22 डिस्ट्रिक्ट में हमने इसको अपने डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर और डिप्टी डायरेक्टर के माध्यम से गांव-गांव तक यूथ क्लबों के जरिए यूथ का एनरोलमेंट किया. यहाँ एनएसएस ने अपना एनरोलमेंट इसमें यूथ का दिया है, वहाँ एनवाईके ने भी दिया है. टोटल 243 ब्लॉक्स में ये हमें लेकर गए और ये आवाज लोगों को स्क्रीनिंग के लिए कि यूथ सामने आए और ये इस टॉपिक के अलग अलग टॉपिक के बारे में वो कह सके. उसके बाद ये हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के 2-2 यूथ जो है वो सिलेक्ट किए, उसको स्क्रीनिंग की और फिर 3 जगह पे हमने ये क्लस्टर लेवल पे जो नोडल केंद्र थे हमारे जम्मू, उधमपुर एंड श्रीनगर, इन 3 जगहों में हमने ये सभी जो अलग अलग 5-5, 6 जिलों को मिला के हमने एक कंपटीशन करवाया और ये सारा वर्चुअल मोड में था.
और वर्चुअल मोड में कंपटीशन करवा के वहां से जो 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हमारे पार्टिसिपेंट आए उनको अब स्टेट लेवल के उन्होंने ये किया है। और मैं बताना चाहता हूं कि नेशनल लेवल पे हम ये आज के जो नौजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, इनमें से 3 स्पीकर सिलेक्ट किए जाएंगे जो नेशनल लेवल पे जाएंगे और टोटल 78 पार्टिसिपेंट जो ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टेट से आएंगे और वो फिजिकल मोड में वहाँ दिल्ली में पार्लियामेंट में विज्ञान भवन में जहाँ जहाँ भी मिनिस्ट्री डिसाइड करती है वहाँ इनको मॉक पार्लियामेंट की जाएगी, वहाँ सुना जाएगा। और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड आने वाले को 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख प्राइज जो है वो गवर्नमेंट की ओर से दिया जाना है। तो ये सारा मैं जूरी मेंबर का भी ये इसमें जो बहुत बड़ा रोल होता है, सबसे डिफिकल्ट काम तो जूरी मेंबर का होता है। और जूरी मेंबर जो है उन्होंने बड़ा नाप तोल के इसको देखना होता है कि कैसे नौजवान, कौन नौजवान जो है वो आगे लाया जा सकता है और जो भी नौजवान आएगा वो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करेगा। और वहाँ जब जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करेगा तो जूरी मेंबर का भी यही होता है, हमारा भी और एनएसएस का सभी कॉलेजेस का सभी का ये होगा कि जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है, लड़का या लड़की है, वो नेशनल लेवल पे भी कोई पोजीशन लेकर आए, तभी इसका नाम हमारा आगे आएगा। तो मैं सभी जूरी मेंबर का भी धन्यवाद करता हूँ। मैडम डायरेक्टर मैडम आपका भी, क्योंकि आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने समय निकाला और इतना बड़ा इवेंट जो है इस काम के लिए आपने शुरुआत कर रहे हैं। और मैं बधाई भी देना चाहता हूँ सभी पार्टिसिपेंट को जो सिलेक्ट होकर आए हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भी 3 सिलेक्ट होकर यहाँ से स्पीकर सिलेक्ट होंगे और उसके बाद सेकंड और थर्ड जो होंगे उनको बाई एयर का जो फेयर है वो हमारी मिनिस्ट्री की ओर से दिया जाना है दिल्ली पहुंचने के लिए। और 8-9 तारीख को जो दिल्ली में ये पार्लियामेंट मॉक पार्लियामेंट होने जा रही है और उसमें ये भाग लेंगे। तो मैं एक बार फिर सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं और खास तौर पे जो हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर एसपी सारस्वत जी हैं उनका, क्योंकि उनके सहयोग से यही स्टेट लेवल का हम ये कंप्लीट करने पर जा रहे हैं। और उनका जो स्टाफ है उनके साथ लगा हुआ उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये इतने बड़े इवेंट के लिए उन्होंने ये इस चीज को एक्सेप्ट किया, कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि हम इसको करके दिखाएंगे। और श्रीनगर से हमारे जो श्रीनगर के ऑफिसर हैं वो जम्मू कश्मीर के ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर निसार अहमद भट्ट साहब, जिन्होंने कि यहाँ 6 जिलों का करवाया है, उनका भी मैं धन्यवाद करवाता हूँ। 6 जिलों का जो श्रीनगर से हकीम अब्दुल अजीज डिप्टी डायरेक्टर हमारे हैं, उन्होंने काफी सहयोग एनएसएस से लिया और वहां से करवाया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मिस्टर खुशहाल गुप्ता डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर उधमपुर, उनका भी मैं, क्योंकि उन्होंने भी 5-6 जिलों का टोटल कंप्लीट करवाया था। तो ये सभी साथी जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि एनएसएस की मदद के साथ हम नौजवानों को एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करें ताकि वो अपनी आवाज जो है वो आगे देश तक ले जा सकें, आम आवाम तक ले जा सकें। तो सभी सुनने वालों को भी मैं यही कहूंगा कि वो मैक्सिमम जो सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम के सुन रहे हैं, जिनकी आवाज उनको अच्छी लग रही है, वो अपना थंब या जो भी आप करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। तो उसका अपना ख्यालत जहार जो करना है, अगर सहमत हैं तो कर सकते हैं, तो बहुत हमें अच्छा लगेगा। इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, सारा कंप्लीट हो रहा है। तो मैं एक बार फिर प्रिंसिपल श्री डॉक्टर एसपी सारस्वत जो हैं, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन जम्मू, उनका, उनके साथियों का, मैडम डायरेक्टर आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इतने बड़े इवेंट के लिए इतना समय निकाला। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद sir. Before this awing event commences, may I acquaint you with the topics on which the young speakers shall deliberate. These are सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, संकल्प से सिद्धि, एक भारत श्रेष्ठ भारत, बीज से बाजार तक and lab, हर खेत को पानी and per drop more crop, make in India, खेलो इंडिया, फिट इंडिया,
Startup India, Stand Up India. Every participant shall be allowed 4 minutes to deliver on the chosen topic. After 4 minutes, the speaker shall be muted. So kindly wrap up within the stipulated time. The adjudicators shall evaluate the speakers on the basis of their articulation, clarity of thoughts, content knowledge, and demeanor. I wish all the participants all the very best. I now call upon the first participant to deliver on her topic, Lubina Masood. She's there. Switch on, camera switch on. Please switch on your camera. Lubina. Yes, ma'am. Please switch on your camera. Am I visible? You are visible and audible. You may start, please. Thank you. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा. Honorable Excellencies and hosts, Assalamu alaikum and a very good afternoon to all of you. This is Lubina Masood from Government Degree College, Bijbihara, and I'm feeling very delighted to have this opportunity of speaking in the State Youth Parliament. And the topic that I've chosen for today is Ek Bharat, Shresht Bharat. When I hear Bharat, I immediately think of its beautiful people. I think of the unforgettable struggle for independence when the entire country stood on the same platform despite belonging to different castes, different religions, and different languages. I think of the Kisans of Punjab who invest their blood so that they can make food for the entire country. I think of the law of the land, which says we, the people of India, as its first words. I think of its strong unity with such a fascinating diversity. India has always been an example. It's always been an example of brotherhood, an example of fraternity, an example of oneness, and an example of togetherness. The bond already exists. We just need to make this bond stronger. And the only and best way to make this already existing emotional bond between Indians even stronger is to provide them a single motive. A motive to make India a golden sparrow again, a motive to make India a developed country and leave behind the word of developing. Now, when I think about it, I realize that India as a whole is comprised of many parts, and these parts together constitute Bharat. But when we look at it, I see where where Tamil Nadu has been so developed, Andhra Pradesh has been slightly left behind. I see where the states of Maharashtra and Punjab have evolved so much. The states lying between them, like Rajasthan and Madhya Pradesh, are still striving. This is where we are lacking. This is where we need ekta. This is where we need progress. We need to make all parts of India equally developed, leaving no one behind, leaving none behind. Therefore, this certainly should become a motive of government to make each and every state of India equally developed. I believe if the least developed states are helped by the most developed ones, and if efforts and money are invested in them, then surely India will very soon become Ek Bharat, Shresht Bharat, and the togetherness and the brotherhood of Indians will even rise more. And the development should certainly be a sustainable one, because we don't only need Ek Bharat, Shresht Bharat, we also need a Satat Bharat, that is, a sustainable India. Moreover, the sense of belongingness and the sense of oneness needs to be promoted so much that a person from Kashmir feels as safe in Gujarat as in Kashmir and vice versa. And oh, how can I not talk about the charismatic religious diversity of India, which makes it so beautiful and so unique. But we all know that religious and communal riots have often arisen, which intend to harm the harmony of this nation. But Indians need to know, Indians need to understand that this is what makes India unique. This is what makes it special. We need to incorporate the concept of Ekkam Sadvipra Bahuda Vadanti in Indians, which means truth is one, wise perceive it differently. And it signifies that one God is worshipped in different ways.
Indians need to understand and accept this from the within, from their hearts, so that they will be the pointers of harmony. We need to teach this to our youth and to the little ones of this nation, so that in the future, none of the communal riots in India will arise, and so that the youth of India become the pointer. 4 minutes are up and Lubina has been muted. I call upon the second participant, Usman Ghani. Usman, are you there? Yes, ma'am. Please switch on your camera, Vita. Ma'am, am I visible, ma'am? No, you are not visible. Am I visible now, ma'am? Yes, you are visible now. Your time starts now, Vita. Start. In a country like ours, diversity is the mix. Inclusion is making the mix work. We differ in every aspect, yet we embrace one another's uniqueness. This is the beauty of what we were, what we are going to be. Inclusivity in diversity, unity in diversity. Being inclusive means we have to appreciate differences and to enjoy diverse viewpoints. Coming together is beginning. Keeping together is progress. Working together is success. A very fanatic good afternoon to all of you. My name is Usman Ghani Loan. I'm from University of Kashmir, and today I'm going to talk on the topic Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. Before throwing light on the topic, we need to understand what do we mean by these three terms: Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. And to understand to these three terms, I would like to quote our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. And I quote, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas is not a call for economic inclusion, but it's a celebration of diversity, the creed of social harmony, and the commitment of individual liberties and rights. There are three aspects in this topic: Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. When we say our first one, Sabka Saath, do we really need Sabka Saath? Yes, we do. For what? Not for voting a particular party to come, but for building an India. But for building an India and bringing the efforts, cumulative efforts to build an India, an incredible India, and one India, where everyone's participation, every citizen's participation is must to build India. And when we talk of second topic, that is Sabka Vikas, do we need to develop all the people? Are we willing to do Sabka Vikas? Yes, Sabka Vikas has to be a reality. Trickle down effects must be a reality. Growth from below must happen. Reality, growth from below must happen. We cannot dream of Sabka Vikas if rich keeps getting richer and poor keeps getting poorer, and the poor are trapped in the economic inequality. We need to bridge the gap between the rich and the poor so that we can do everyone's Vikas in our country, so we can prosper together, we can come forward together, and we can do everyone's Vikas. And the third one, when we talk of Sabka Vishwas, what do we mean by Vishwas? Yes, we have to bring everyone's Vishwas. We have to remove inequality. We have to make India, we have to make India where there's no discrimination, may it be on the basis of color, creed, sex, religion, or anything. We have to think of India where India is corruption free, where India there's no corruption. We have to think of India where we can control environmental pollution. We can build a great India. These three terms are correlated. We cannot separate one from another. As Gandhiji has said, that if you are looking for India, go into the village. Look for the great India into the village. We have to adhere by the principles of our constitution so that we can build India. We can show to the all nations, to all world, that this is the India, this is new India, and this is the India we are talking of. This is Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. It's not about the scheme or a campaign, but it's a dream. It's a dream we are looking for, and every citizen from Kashmir to Kanyakumari will work on this dream, and we will make it true. We will adhere to the principles of Constitution,
and we will win. We will adhere the principles that this is the India we are looking for, and we will show to every nation, to every world. And the given time is over. I'll call upon the next speaker, Ubaid Majid Mir. Is Ubaid there? Am I Please. eligible now? No, you're not visible. Yes, you are. Now I'm eligible, Your right? time starts now. Yes, you are visible. Your time starts now. Please start. Honorable jurymen and women, honorable guests, and fellow youth parliamentarians. Assalamu alaikum, adab, and good afternoon. I am Ubaid Majid Mir. I come from Department of Law of University of Kashmir. And I choose to speak on the subject that is Sabka Saath, Sabka Vikas, and Sabka Vishwas. My dear countrymen and women, as we are marking the Azadi Ka Amrit Mahotsav, we need to look back at the 75 years journey of our country. When we look back exactly 75 years before, in a united fight against colonial masters, we liberated our country. But our fight didn't end there. Our fight for Azadi, a greater Azadi, against poverty, Azadi from illiteracy, Azadi from hunger, and Azadi from violence, Azadi from inequality, was our greater battle, which was to be guided by the great vision document of Constitution of India. The document we gave ourselves to guide us in our noble path of greater freedom and greater Azadi. My dear countrymen and women, today we pause and look back what we have achieved so far. And we see that thanks to the governance model of Sabka Saath, Sabka Vikas, and Sabka Vishwas, that we have made great strides in our battle against those ills that are thwarting India, in our challenges that are before our nation. My dear countrymen, India, in order to be a developed and a powerful country and to get this rightful place in the world, its development model needs to be inclusive. And that is what this model of governance is. And it calls us into picture two important aspects. That if India has to progress on, it doesn't have to take only with it only the rich and privileged, but every Indian with itself. Without a woman, without a child, without a poor, without a worker, every Indian counts here. And we see that there are two aspects. One is addressing the substantial inequalities. The second thing is empowering the Indians so that they don't fall back into the earlier problems. Thanks to this governance model of Sabka Vikas and Sabka Saath and Sabka Vishwas. And now we have schemes, a series of schemes addressing the inequalities, addressing the ills that are keeping India behind. And we have Minutes are over. I'll call upon the fourth participant, Mehek Fayaz.
Mehak, Ma'am, you're not visible, beta. am I visible? No. Am I visible? No, still not, beta. No, you are not. Yes, you're visible now. Exalted Principal Sir of the Government College Jammu, worthy Director, Dr. Professor Masmeen, Honorable jury members, I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very good afternoon to everyone. It's me, Mehak Fayaz, NSS volunteer from Government Degree College, Sopor. It's an immense pleasure for me to speak here on one of the most important topic, Startup India, Stand Up India. Startup India is a much needed initiative that was started by our Prime Minister, Mr. Narendra Modi in 2015. We know that India is a land full of talented people. However, the youth does not have many opportunities to fulfill their dreams and ambitions. Thus, this campaign is a great kickstart for the youth to accomplish their goals. Our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, announced it on Independence Day. It got launched on 16 January 2016 at Vigyan Bhavan, New Delhi, to give a helping hand to the youth. Dear audience, under this scheme, many steps were taken by the government, such as various types of tax exemption, easy exit policy, self-certification, and no inspection by regulatory for 3 years, and creating 75 startup hubs for IIT and NIT. The main objective of this scheme is to make India a hub of innovation, design, and startups. This scheme works under the guidance of Ministry of Commerce and Industry. Major advantages of this scheme are that it generates massive employment up to 18 lakh persons, creates skilled, well-experienced and quality entrepreneurs, and improve country's business-oriented reputation on international platform. Dear listeners, the government has made huge effort to create a startup culture in India. Well, the challenges are many, but the way India is driving to create a startup, it will definitely transform India from a nation of job seeker to nation of job creator. Dear audience, now coming on to the next scheme, that is the Stand Up India scheme. This scheme aims at promoting entrepreneurship among women and scheduled castes and tribes. The scheme is also launched by our Prime Minister, Honorable Narendra Modi, on 5th April 2016. The scheme is anchored by Department of Ministry, Government of India, Department of Financial Services. This scheme facilitates bank loans between rupees 10 lakh to 1 crore to at least one woman borrower and to at least one scheduled castes and tribes per bank branch for setting up a greenfield enterprise. Thank you so much everyone for your time and attention. Thank you, Mehak. The next participant is Anmol Sharma. Is he there? Yes, ma'am. Okay. Anmol, switch on your camera. Yes. Your time starts now, beta. You can start. Yeah,
तस्मात् लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं बलं सुखम आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्य सर्वार्थ साधनम। आप सबको अनमोल शर्मा का सादर नमस्कार। आइए सबसे पहले मिलते हैं आज के आधुनिक मानव से। फोन पे खेल क्रीड़ा, टीवी से मनोरंजन और कंप्यूटर पे पढ़ाई लिखाई करते हैं जनाब। स्वास्थ्य का पूछो तो कहते हैं इसके लिए भी कोई यंत्र बन जाए तो आराम कुर्सी पर बैठे बैठे स्वास्थ्य भी बन जाए। जी हाँ, यही है आज की स्थिति। इस गतिहीन जीवन शैली के कारण ही हम हृदय रोग, मधुमेह और मोटापे जैसी समस्याओं से घिर चुके हैं। आंकड़ों की बात करूं तो पिछले 5 सालों में भारत में मोटापे की समस्या 4% बढ़ गई। वहीं 1990 और 2010 के बीच मात्र 2 दशकों में हृदय रोग से मरने वालों की संख्या में 59% की वृद्धि हुई। ऐसे में ये जरूरी है कि हम अपनी थमी हुई जिंदगी में थोड़ी तेजी लाएं, और ये तेजी आपको देगा खेल। जी हाँ, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने का सबसे सरल तरीका है खेल। आंकड़े बताते हैं रोजाना शारीरिक गतिविधि से आप हृदय रोग की समस्या को 30 से 45% तक टाल सकते हैं। अगर आप शारीरिक रूप से सक्रिय होंगे तो आपका दिमाग भी तनाव रहित होगा। और आज का मानव जो कि तनाव और अवसाद से ग्रस्त रहता है, उसके लिए तो खेलना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वो कहते हैं ना, स्वस्थ तन तो स्वस्थ मन। अगर आपका शरीर चुस्त दुरुस्त और ऊर्जावान है तो आपका मन भी शांत, स्थिर और रचनात्मक होगा। एक शोध में सामने आया है कि आज का छात्र अत्यंत निष्क्रिय है। किताबों में वह इतना डूबा हुआ है कि खेलने का तो उसके पास समय ही नहीं। शिक्षा का ये उद्देश्य तो नहीं था। महात्मा गांधी ने कहा था, शिक्षा यानी मन, शरीर और आत्मा का सर्वांगीण विकास। परंतु खेल के बिना तो यह विकास अधूरा है। खेल ही तो हम सब में एकता, समानता, सहयोग की भावना को विकसित करता है। खेल हमारी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा रहे हैं। दुनिया के हर समाज और सभ्यता ने खेलों की स्वीकृति को माना है, खेलों के महत्व को माना है, पहचाना है। रामायण महाभारत से लेकर ग्रीको रोमन दंत कथाओं में खेलों का जिक्र इस बात का प्रमाण है। तो फिर क्यों आज हम खेल से दूर होते जा रहे? जरा सोचिए, आज का किशोर अगर सुस्त होगा तो कल का युवा कैसा होगा? भावी भारत कैसा होगा? सुस्त, बीमार और दुर्बल नहीं। उठो और खेलो इंडिया। आइए खेल को हम अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। घर से ही शुरुआत करें। माता पिता खुद खेल में भाग लेकर बच्चों को प्रोत्साहित करें। स्कूल में प्रतियोगिता का स्वस्थ वातावरण हो। केवल विद्यार्थी ही क्यों, समाज के वयस्क और वृद्ध तबके को भी हम खुले मैदान में लाएं। जब भारत का हर घर खेलेगा तो एक नई खेल संस्कृति का निर्माण होगा, जो कि हमारे और हमारे देश दोनों के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। अंत में इन्हीं पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, पर ये तो कोई समझ ना पाया। भागते रहे धन अर्जित करते और खो गया स्वास्थ्य धन हम सबसे। बाद में पछतावा है सबको सताता, जब धन भी ना स्वास्थ्य को वापस ला पाता। आओ समझे हमें जो पुरखों ने बोला, स्वास्थ्य बिना धन व्यर्थ में जोड़ा। अच्छा होगा अभी संभल जाएं, खेलें कमरे से बाहर आए, खेलें खुद को स्वस्थ बनाएं, खेलें भारत को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अनमोल। The next participant is Shaina Singh. Shaina, you're there? Yes, ma'am. Am I visible? No, you're not. Yes, you are. Okay. Shall I start? Yes. Our startups are changing the rules of the game. That's why I believe startups are going to be the backbone of New India. A very aesthetic afternoon, honorable jury members and my fellow contestants. Startups, as a messenger of rich diversity, can provide India a global identity for competing other countries. Current decade is Tech Aid of India. Government is incorporating changes for leveraging innovation, entrepreneurship, and a healthy startup ecosystem post-haste, eventually contributing to economic growth. Only 40% of Indian youth entering the workforce acquires employment.
and WTO estimates it to increase by 32%. World's most innovative Indian brains, coupled with training and supportive government, can be utilized for startup ventures, exploiting demographic dividend through Skill India. Startup India initiative was launched by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji on 16 January 2016 to build a strong ecosystem for nurturing innovation and entrepreneurship. DPIIT coordinates its implementation, facilitating 10 lakh to 1 crore of loan for at least one SC or ST and a women borrower per bank branch for setting up a greenfield enterprises. Restrictive government policies like license Raj, land permission, environmental clearances, etc. have been discarded. Initiative of DPIIT, along with other 5 government departments, have stirred entrepreneurial spirit across the country by setting up 75 startup supporting hubs in NITs, IITs, IIMs, and other central universities of India. Indian startups are currently working with 55 different industries. Innovative and talented youth can create startups, generating employment for others. These are supported by easy loans anytime, anywhere through Mudra Yojana and without collateral through SIDBI, Stand Up India portal. Venture Intelligence Report states Indian startups have risen from $11.5 billion to $42 billion in 2021. Indian Tech Unicorn Report states India saw 46 unicorns in 2021 alone, and there are total 90. Indian startup ecosystem is 3rd largest in the world, with 60,000 startups, and 45% of them are women startups. Nykaa, BharatPe, Cred, etc. are not only developing tech, but also providing innovative solutions. WTO estimates India to be a $5 trillion economy by 2025. Prominent challenges to economic objective are low productivity, high supply chain cost, trading and middlemen inefficiencies, inadequate access to finance and banking sectors. To eradicate the challenges and accelerate India's transformation into an unstoppable economic powerhouse, government need to focus on austere coordination between RBI and other banks, building regional success stories, moving startup towards villages, affordable basic and advanced training for stakeholders, provisionalizing requisite manpower through Skill India initiative, physical and online facilitation center, and exploiting digital domain by getting 100% population online. The bottom line is our identity must change from a developing nation to a developed nation. So India. Four minutes are up. I'll call upon the next participant, Irfan Ahmed Khan. बहुत to the point. Yes. बहुत जी आप दिख पा रहे हैं बेटा, आप स्टार्ट करें. को मेरा आदाब, काबिल इज्जत व एहतराम, आज जिस मौजू पर मुझे लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका अनवान है खेलो इंडिया. खेलो इंडिया जिस मौजू पर मुझे लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका अनवान है खेलो इंडिया. खेलो इंडिया हुकूमत हिंद की एक अहम मुहिम है जिसका मकसद हिंदुस्तान के अंदर छोटी मोटी खेलों को जितनी भी खेले हैं उनकी तरक्की के लिए एक इकदाम उठाना और खेलों की मदद से देश और समाज को स्वस्थ रखना. नाज़रीन और सामीन, आज मेरे दिल में जज्बात का तलातुम दरिया है. मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपने जज्बात को सफाए दिल से जुबान तक कैसे मुंतकिल करूं. बात गुज़श्ता कुछ सालों की जाए तो खेल के नाम पर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को जाना जाता था. बाकी जितनी भी खेलें थी उनका नाम सिर्फ
किताबों तक महदूद था। नाज़रीन व सामीन, चीन जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, लेकिन बात जब नौजवान आबादी की आती है तो हमारा हिंदुस्तान पहले मुकाम पर आता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अपनी हुकूमत हिंद को, मौजूदा सरकार को और खास तौर पर वजीर अपने देश के प्रधानमंत्री को, जिनकी मदद से आज हमारे समाज में खेलो इंडिया जैसी स्कीम है। खेलो इंडिया कोई अलग से स्कीम नहीं है, बल्कि खेलो इंडिया एक ऐसी स्कीम है, पहले से जो स्कीमें एग्जिस्ट कर रही हैं, जैसे खेलो इंडिया जो पहले से स्कीमें एग्जिस्ट कर रही हैं, जैसे अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, राहुल गांधी खेल योजना, इस जैसी सभी स्कीमों को एक साथ क्लब कर तजवीज करने का नाम ही खेलो इंडिया है। खेलो इंडिया की मदद से काफी सारी निजी खेलों को भरपूर नाम तो मिला ही है, उनको भरपूर पहचान तो मिली ही है, साथ ही साथ खेलो इंडिया की मदद से हमारे नौजवानों के अंदर खेल को लेकर काफी बेदारी पैदा हुई है। सामीन और नाजरीन, एक वक्त था जब हमारे नौजवान खेल को एज ए प्रोफेशन, खेल को पेशे के तौर पर लेने से काफी कतराते थे। उनको ये लगता था कि खेल सिर्फ वक्त गुजारी है, लेकिन आज खेलो इंडिया स्कीम की मदद से ये बात यकीनी बन पाई है कि खेल सिर्फ वक्त गुजारी नहीं, बल्कि खेल से एक अच्छा जीवन भी गुजारा जा सकता है। सामीन और नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं तो खेलों को लेकर कम इल्मी और मनफी सोच का ये नतीजा है कि आज भी हमारे माशरे में ऐसे मुहावरे एग्जिस्ट करते हैं जिनका आज के हिसाब से मतलब बिल्कुल गलत है। हमारे घरों में, हमारी फैमिली में ये बोला जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। सामीन और नाजरीन, ये मुहावरा बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ठीक है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब, ये लाइन बिल्कुल गलत है। दरअसल ये लाइन इस तरह से थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, नाचोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। खेलने कूदने में और नाचने कूदने में बहुत फर्क है। हम ये नहीं कह सकते कि आज खेलो इंडिया की मदद से हमारी खेलों को अहमियत मिली है, नहीं, हमारी खेलों को अहमियत हमेशा से थी, लेकिन हमारी समाज की कम इल्मी की वजह से खेलों की तरफ हमारा रुझाव नहीं था। अगर आज भी समाज को लगता है कि ये मुहावरा ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा, अगर खेलने कूदने से इंसान खराब ही होता है तो सबसे पहले खराब सचिन तेंदुलकर जी को होना चाहिए था, जो एक 10th फेल हैं। लेकिन आज भी उनका नाम न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फख्र और इज्जत के साथ लिया जाता है, और आज उनको जो पहचान मिली है वो खेलों की मदद से मिली है। सिर्फ सचिन तेंदुलकर जी ही नहीं, बल्कि हमारे टोक्यो ओलंपिक के आपकी आवाज बंद हो गई बेटा। अच्छा, आपने किया, सॉरी, द टाइम इज अप। I'll call upon the next participant, Ifra Batul. Ma'am, am I visible? You're not, beta. Ma'am, am I visible now? Yes, you're visible now. From being a country which is among the top most countries in the world in the field of scientific research to the development of atomic clock, from Make in India to completely Atmanirbhar Bharat, India is marking and achieving milestones in the process of development. Good afternoon, greetings to one and all. I'm Ifra Batul, and today I'll be sharing my views on Make in India. With $2.3 trillion in GDP, India is the world's 9th largest economy and the 3rd largest by purchasing power parity. Here, the manufacture sector accounts for only 16% of the country's GDP, compared with the service sectors, nearly 52%. While the rapid growth of service sector have served the nation well right from 1990s, these sectors were the first to collapse when the government announced the nationwide lockdown in 2020. The rapid decline of the sector has rendered millions jobless. It is this pandemic that has shown why the nation needs to shift its focus on boosting the crucial manufacturing sector. To capitalize on the demographic dividend, India must create nearly 1 million jobs per month over the next decade.
Here, the manufacturing sector has the potential to provide large-scale employment to the young Indian population. With this in mind, the Indian government has adopted Make in India as a core policy initiative to encourage and accelerate growth of country's manufacturing sector. Jobs are not the only reason why India needs to focus on boosting the manufacturing sector. It is also important for the country's future growth potential, which could face stagnation if we continue to depend on agriculture and exports besides services. When we will start making each and every minute thing in our own country, the industries and governments will start going hand in hand. More than 100 million job opportunities will get created, which will increase the purchasing power of a common man, which will in turn result in increase in demand and profit. Global companies will thus start doing businesses in India. High-tech technologies will be introduced. Thus, India can emerge as a net exporter in the international market. India has several strengths that could help it become a manufacturing powerhouse, a large pool of engineers, a young labor force. We have 3Ds: democracy, demography, and demand for the development of manufacturing sector. 65% of the Indian population is below the age of 35 and an advantage when compared to other countries. And of course, the low manpower cost. We have few shining examples of world-class excellence in manufacture as well-established core sectors, such as textile, auto component, and more recently, petrochemicals. For example, Bharat Forge's Mundhwa plant, the world's largest forging factory, is a state-of-the-art complex that has placed India on the world map of manufacturing. According to me, some of the possible areas of focus for improving our manufacturing sector are as follows. Advocate emphasis on skill development and training, which is now possible because of the introduction of the new education policy of 2020. Promotion of MSMEs. MSMEs are vital for the country's economic and social development. One of the ways to improve the competitiveness among the MSMEs is the cluster approach, which addresses the general problem of taxation, interest rate and FDI policies, and simplified labor laws. The fiscal stimulation of 2 lakh crore additional credit given to MSMEs under the Union Budget of 22-23 is a welcome step in promoting MSMEs. Reforming of existing labor laws must be prioritized to make them simplified and flexible. Establishment of manufacturing and proper infrastructure is required. Only then can we achieve the dream of Make in India. Thank you so much. Thank you, Ifra. I'll call upon Mr. Parveen Kumar. Parveen, are you there? Yes, ma'am. I'm audible? Yes, you are audible. नमस्कार, मैं प्रवीण हरिपुर वासी इस बैठक में मौजूद सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। आज मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत पर भाषण देने जा रहा हूं। मुझे आशा है कि आप ध्यान सुनेंगे। अनेकता में एकता ही है असली पहचान। वीडियो नहीं आ रही है। वीडियो एकता ही है असली पहचान। एक भारत प्लीज वीडियो होस्ट प्लीज वीडियो नहीं ऑन है इनकी। प्रवीण जी आपकी वीडियो नहीं आ रही। आप कुछ है नहीं प्रवीण जी अपनी वीडियो ऑन करो। हाँ अब यस है, अब शुरू करो प्लीज। जूरी मेंबर प्लीज नोट। प्रवीण आपकी अब यस बार बार उसमें यस दिखा। आप दिख रहे हैं, अब स्टार्ट करें। होस्ट प्लीज। अभी आप ऑडिबल हैं बेटा, विजिबल भी हैं, आप शुरू करें। अनेकता में एकता ही है असली पहचान। एक भारत श्रेष्ठ भारत कहलाए भारत महान। भारत एक होगा तभी तो श्रेष्ठ होगा। लेकिन जब भारत से गरीबी, करप्शन जैसी समस्याएं हट जाएंगी और एक होगा तो फिर श्रेष्ठ नहीं होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। विविधता में एकता ही भारत देश की पहचान है। इसलिए कल से ही हमारे राष्ट्र के लिए एकता को सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। एकता के बल पर ही हमारे देश ने मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक के शासन को खत्म करने में विजय पाई है। यही नहीं, भारत की आजादी के समय जिस तरह
हमारे राष्ट्र के सभी लोगों ने एकजुट होकर संघर्ष किया था और विजय प्राप्त की थी। ये भारत की एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत में जाति, धर्म, पहनावा, बोली, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं में काफी धर्म, पहनावा, बोली, इन सभी में एकता है। वहीं भारत में एकता की इसी पहचान को बरकरार रखने के लिए और देश के राष्ट्रीय एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा राष्ट्रीय एकता और अखंडता वाले एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण की नींव को पक्का करने के साथ राष्ट्र के सभी राज्यों की संस्कृति को समझने और आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए मोदी सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की शुरुआत की। ये योजना बड़े ही अच्छे ढंग से देश के भिन्न भिन्न राज्यों को आपस में जोड़ सकती है। हम सभी नागरिक का कर्तव्य है कि हमें इस एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का हिस्सा बनकर इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक भारत श्रेष्ठ भारत एक नई और प्रभावशाली योजना एवं पहल है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर की गई थी। इस योजना का उद्देश्य मौजूद सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में एकता को बढ़ावा देना है और राज्यों को राज्यों से मिलाते चले जाएं, कि राज्यों को राज्यों से मिलाते चले जाएं, देश को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। इस कार्यक्रम के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समृद्ध संस्कृति, विरासत, खान पान, पहनावा, हस्तकला, संस्कृति, परंपरा, भाषा, रीति रिवाजों से देश के लोगों को रूबरू कराया गया। इस अभियान में संस्कृति आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए दो अलग अलग राज्यों को जोड़ीदार बनाया गया, जैसे उत्तराखंड और कर्नाटक, राजस्थान और असम आदि। जैसे इस साल उत्तराखंड ने कर्नाटक को चुना, तो अब उत्तराखंड कर्नाटक की संस्कृति, भाषा, खान पान, पहनावा, रहन सहन, पर्यटन, रीति रिवाज, व्यवसाय आदि के बारे में जानेगा और समझेगा। इसमें दोनों राज्यों के बीच के भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद को ताजा करती है, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते देश के छोटे छोटे राज्यों को देश में सम्मिलित करके देश का सुखद एवं शांतिपूर्ण एकीकरण किया था। ऐसी महान सोच को वल्लभ भाई पटेल ने देश में लाया था, जिसको फलीभूत करने के उद्देश्य से ये कदम उठाए जा रहे हैं, जिसे बिना किसी मतभेद के आसानी से राज्यों के बीच अच्छी साझेदारी हो पाएगी। दोस्तों, अगर भारत एक होगा तो तभी श्रेष्ठ होगा। हर राज्य जो है भारत में 4 minutes are over. Next participant, Amandeep Singh. I'm visual, ma'am. No, you're not, beta. Excuse me, but the list shows only 9 participants. So I have been sent a list of only 9 participants. No, sir, that must be the old list. As per the new list, there I are... received it. How do I say that this is? Please confirm it, whether I have only 9 participants or there are more participants. Even the There list are which not is total, of sir. 9 candidates. The list which is No, given no, have 10, 10, please 10 There are candidates. only 9 candidates. I have received it by email. The last one was Parveen Kumar, 9th. नहीं, प्लीज ये ये किया था, एक छूट गया था, उधमपुर का एक कैंडिडेट छूट गया था, निसार अहमद, निसार डिप्टी डायरेक्टर हमारे हैं। जी, ये इन्होंने जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं, उन्होंने ये थोड़ा सा डिले कर दिया एक नाम भेजने में। पहले उसने 2 नाम भेजे। वो नाम, वो बच्चा है, वो थर्ड आया था, उसका रह गया, छूट गया था, उसका हमने बाद में भेजा था। उनका नाम बता दो ना क्या था, फिर मुश्किल ना हो जाए। हाँ, उनका यही नाम है जो अभी बोलने जा रहे थे। प्लीज जजेस, ज्यूरी प्लीज नोट कर लें, प्लीज इसको नोट करें प्लीज जजेस। ये हम आपको दोबारा मेल भी इसका कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। ओके सर। जी। स्टार्ट सर, मैम। Amandeep, आप visible नहीं है बेटे। Are you there? यस मैम।
Give me a time. No problems. I'm visual now. हाँ जी, you're visible. May I start, ma'am? हाँ जी, आप स्टार्ट करें बेटा. मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ कोस कोस पे संस्कृति, वाणी, खान पान और पहनावा बदल जाता है. मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया को पाया जाता है. मैं विजुअल, सॉरी मैम, कैमरा. मैम विजुअल मैम. वीडियो नहीं आ रही है अमनदीप, आपकी वीडियो नहीं आ रही बच्चे. Give me one chance. Network problem is there. ये आपकी प्रॉब्लम रहेगी. Yes, sir. Okay, ma'am. This is your problem. Are you, ma'am? Yes. Can I start Madam, from? now give him, his time starts now. Amandeep's time starts now. Amandeep, start immediately. मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ कोस कोस पे संस्कृति, वाणी और खान और पहनावा बदल जाता है. मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता है. मैं अमनदीप सिंह, जिला उधमपुर से NS वॉलंटियर आपके सामने अपने विचार रखने जा रहा हूँ. हर विषय ही महत्वपूर्ण है और हर विषय पे ही हमें काम करने की जरूरत है. हर विषय ही महत्वपूर्ण और हर विषय पे ही हमें काम करने की जरूरत है. और आज मैं एक भारत और श्रेष्ठ भारत भारत पर अपने विचार रखने जा रहा हूँ. मैं कैमरा. बोलते जाओ आप अमनदीप. ओके मैम. Don't waste time. एक भारत और श्रेष्ठ भारत पर अपने विचार रखने जा रहा हूँ. सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हमारे देश को एक किया था. अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को श्रेष्ठ भारत बनाएं. हमारा देश ही केवल एक ऐसा देश है जहाँ कदम कदम पर, जहाँ हर 50 मील पर भाषा बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है, खान पान बदल जाता है. हमें ही देख लीजिए, आज हमारे बीच कोई कश्मीर से आया है, कोई जम्मू से है, कोई किश्तवाड़ से है, कोई डोडा से है. जो कश्मीर से है वो कश्मीरी बोलता है, उसका कश्मीरी कल्चर है. जो जम्मू से है वो डोगरी बोलता है, उसका डोगरी कल्चर है. इसी तरह हमारे देश में अनेक अनेक कल्चर्स है, अनेक अनेक भाषा बोली जाती है, अनेक अनेक भाषाएं बोली जाती है. ये हमें, और एक चीज हमें जो जोड़ती है वो है हमारा देश. हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतीय हैं. और समाज अनेक है, भाव एक है, बंधन अनेक है, पर लक्ष्य एक है. रंग अनेक है, पर तिरंगा एक ही है. एक भारत और श्रेष्ठ भारत, ये एक ही तरीके से बन सकता है जब हमारे बीच. नहीं आ रही अमनदीप, आपकी फोटो नहीं, पिक्चर नहीं आ रही. नेटवर्क. सर जी बोलने दीजिए, इसको बोलने दीजिए, कोई बात नहीं. स्पीक जी, इसका बड़ा रिमोट कहीं से बोल रहा है. लेट हिम स्पीक. हाँ, हमारी संस्कृति और हर हमें देश को जोड़ता है वो हम सब हिंदुस्तानी हैं. हमारे समाज अनेक है पर भाव एक है, बंधन अनेक है पर लक्ष्य अनेक है, रंग अनेक है पर तिरंगा एक ही है. आज हमारे देश की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है एकता. यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया स्पेशलिटी. अगर हमारे बीच एकता है तो हम सबसे ताकतवर देश है. पर अफसोस इस बात का है कि हमारे बीच एकता खत्म हो रही है. मैं इतिहास का छात्र हूँ, हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ. हिस्ट्री में एक कहावत है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ. हिस्ट्री दोहराई जाती है. हमारा देश एक समय में गुलाम था. वो गुलाम इसी वजह से था कि हमारे बीच एकता नहीं थी. अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल फिलॉसफी से हमारे देश पे कब्जा किया और हम गुलाम बन गए. और आस्ता आस्ता हमारे बीच फिर एकता आई, हम अंग्रेजों से लड़े और हमारे अपने देश को आजाद कराया. मुझे ऐसा लगता है ऐसे ही हम अगर धर्मों के नाम पर लड़ते रहेंगे, वो दिन दूर नहीं, हमारा देश फिर से गुलाम बन जाएगा. ये एक चिंता का विषय है और हमें इसे एकता से लाना पड़ेगा. हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये योजना चलाई है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत. हमारा रास्ते भले ही अलग होंगे पर मंजिल एक ही होगी. वो मंजिल ये होगी कि हमने भारत को ताकतवर बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, एक डेवलप्ड देश बनाना है. आज हम सब अलग अलग
राज्य से आए हुए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, अलग अलग धर्म के हैं, पर हमारा सपना तो एक ही है कि अपने देश को अच्छा बनाना है, ताकतवर बनाना है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है कि कदम मिलाकर चलना होगा, अपमानों में सम्मानों में, अपुल बलिदानों में हमें कदम मिलाकर चलना होगा, अंगारों में चलना होगा, हमें कदम मिलाकर चलना होगा। थैंक यू। लास्ट में वीडियोस की थोड़ी इशू। Thank you, Aman. Well, that was an event full of energy and vibrance. Thank you, all the participants. I request the honorable jury members to kindly mail the results to the official mail ID of the college, please. May I now request Mr. Nisar Ahmed from Nehru Yuva Kendra to kindly present the concluding remarks and a vote of thank you, please. Thank you, madam. Dr. Yasmin Ashai ji, Dr. S. Sarawat Sat, Principal Government Women College, Parade, एक jury member. Sir ji, video off है आपका. May I request all to please switch on your videos for a while. Yeah. जी जी. Dr. Yasmin ji, Director Colleges, J&K Government. Dr. S.P. Sarawat, Principal Government College for Women, Parade Ground, Jammu. Jury members, हमारे कश्मीर से, जम्मू से जितने भी पार्टिसिपेंट थे, मैं सबका खासकर मैडम डायरेक्टर कॉलेजेस का और हमारे जो स्टेट डायरेक्टर है नेहरू युवा केंद्र संगठन J&K और लद्दाख के श्री गिल साहब, मैं मैडम डायरेक्टर कॉलेजेस का, हमारे स्टेट डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र संगठन J&K स्टेट का, और खासकर हमारे जो प्रिंसिपल हैं जिन्होंने ये होस्ट किया और हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना हमारी पूरी मदद की, मैं उनका और उनके स्टाफ का और खासकर मैडम कौर का जो आज हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं है, लेकिन उसने काफ़ी प्रयास किए और लेकिन उनकी जो तबीयत खराब होने की वजह से वो आज इस प्रोग्राम में शामिल नहीं है। उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और जो नोडल डिस्ट्रिक्ट थे डिवीजनल लेवल पे भी हमारी पूरी सहायता की इस प्रोग्राम को सफल बनाने में। मैं सबका और जितने भी हमारे जूरी मेंबर्स हैं इनका नेहरू युवा केंद्र की संगठन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विस स्पोर्ट भारत सरकार की ओर से इनका पूरा थैंक्स करना चाहता हूं और खासकर हमारे वुमेन कॉलेज परेड के प्रिंसिपल साहिबान और स्टाफ्स का जिन्होंने पूरी रात दिन कोशिश अपने मेहनत करके इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हमारी पूरी सहायता की है। हमारे डायरेक्टर साहब का और मैडम यास्मीन जी का जो डायरेक्टर कॉलेजेस हैं J&K गवर्नमेंट के, उनका वो पूरे यहाँ पे बिगिनिंग से अभी तक यहाँ पे बैठे हैं, उनको अपने कीमती समय निकाल के हमारे पास बैठी, उनका सबका नेहरू युवा केंद्र से की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। थैंक्स। प्रिंसिपल साहब इसको करें। प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन परेड ग्राउंड जम्मू से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्रोग्राम को जब तक जज साहिबान जूरी मेंबर्स जो अपना रिजल्ट कंपाइल करके उनके पास मेल आएगी तब तक इसको प्रोग्राम को हम एंड करें। हाँ जी सर, जस्ट अ मिनट। Respected Director Colleges, respected Director Nehru Yuva Kendra Sangathan, jury members and participants, it was wonderful experience for us to host the 3 rounds of Youth Parliament
We have tried to do our best. Still, if there have been any shortcomings in the organization of the program, my apologies are due. I thank all of you who have participated in the event with full zeal and enthusiasm. I'm thankful to the authorities of Nehru Yuva Kendra Sangathan for giving us this opportunity to host the program. It has been a wonderful experience listening to the great ideas of the participants at every round. Whosoever wins or goes for the next round is not that important. Participation is more important. Putting up your ideas across is more important. And we have been really, really enlightened by the ideas of our young participants. It was personally very learning experience for me. And hopefully this will remain in the YouTube channel, and these pearls of wisdom will remain available for other students to see and learn. Thank you very much. Evaluation sheets through email to us. निसार साहब हो गया, thanks. हाँ जी.